Dear students, how are you? Today we will discuss worksheet number 38, class 10th, carbon and its compounds, allotropes of carbon. Allotropes are different form of same element having different physical property but same chemical properties. For example, diamond and graphite are two allotropes of carbon. यानी हैं तो दोनों कार्बन के रूप बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है ग्रेफाइट की और डायमंड की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. Structure hexagonal arrays placed in the layers one above the others. Layers के रूप में होते हैं एक दूसरे के ऊपर. थ्री डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर होती है डायमंड की. बॉन्डिंग each carbon atom is bonded to three other carbon atoms. One of these bonds is a double bond. Diamond each carbon atom is bonded to four other carbon atom forming a rigid three-dimensional structure. अपीयरेंस स्मूथ एंड स्लिपरी होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इसके बावजूद भी ये गुड कंडक्टर है बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर. यूजेस ग्रेफाइट इज़ यूज एज lubricant and in pencil lead. Diamond is used in cutting tools, jewelry, etc. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन. C60 बकमिंस्टर फुलरीन. Versatile nature of carbon. The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds called organic compounds or carbon compounds. Catenation. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. The property is called catenation. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 to 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. यानी कार्बन एटम से अटैच होकर बहुत लंबी लंबी चैन बनाता है. तो इस तरीके से जब लंबी लंबी चैनें बनेंगी तो बहुत सारे कंपाउंड्स वो बना पाता है. टेट्रावेलेंसी. कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स. मोनोवैलेंट एटम्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एट्सेट्रा. 4 वैलेंसी होने की वजह से ये कई तरह के एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर पाता है. The reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the molecule to hold on to the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. छोटा साइज होने की वजह से ये अटैक कर पाता है उनको. जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो एटम या मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच रहते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. Synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable from natural diamond. यानी कि सिंथेटिक डायमंड बनाए जा सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम नकली डायमंड भी बना सकते हैं अगर हम कार्बन को बड़े हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखें. Fullerene form another class of carbon allotropes. The first one to be identified was C60, which has carbon atom arranged in the shape of a football. Since this looked like geodesic dome designed by the U.S. architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene. Let's practice some question now. Why carbon shows versatile nature? Carbon shows versatile nature because of its unique property of catenation, that is formation of long carbon chain, and its tetravalency. It can bond with other elements easily. Why do carbon atoms form a large number of compounds? Carbon atoms have the unique ability to form covalent bond with other atoms of carbon, giving rise to long chain, and it has 4 valency. It can bond with 4 carbon atoms and other elements easily by sharing electrons. That is why carbon atoms form a large number of compounds. What is the minimum number of carbon atoms in fullerene and what is its shape? 60.
60 carbon atoms and its shape is like football. आंसर नंबर 4 है A boy sharpens a pencil at both the ends and connects them to the poles of a battery. Will the current flow through the circuit? New reason. Yes, current will flow because graphite is a good conductor of electric current as it has free electrons and pencil lead is made up of graphite.